गुड इवनिंग। तो पहले तो वो ट्रायल था, इंस्टाग्राम पे हम ट्राई कर रहे थे कि किस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कल हो नहीं पाया था। अब आज हमने हमने जो कल हमने बात की थी सिर्फ माफ करने की, क्षमा की, कि एक इंसान कैसे क्षमा कर सकता है। आज हम बात करना चाहते हैं उन लोगों की जो आपके साथ शारीरिक शोषण करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज। एंड सेक्सुअल अब्यूज की, आई हैवंट गॉट योर रिक्वेस्ट एरन। सेक्सुअल अब्यूज आपके साथ करते हैं, चाहे आप बचपन में हो या बड़े होने के बाद हो, आपके साथ अगर सेक्सुअल अब्यूज होता है और तो आप उसे कैसे माफ करते हैं, आप उससे आगे कैसे बढ़ते हैं? क्योंकि कल जब हम क्षमा की बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको उन्नति करनी है जिंदगी में तो आपको हर हादसे से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कल उसने प्रोग्रेस के बारे में बताया कि आप PROGRESS के सारे चरण बताए। तो आप कैसे प्रोग्रेस करते हैं, आप आगे कैसे बढ़ते हैं? अब आगे तो आप बाद में बढ़ेंगे, पहले शारीरिक शोषण का मतलब क्या है, क्योंकि हर एक के लिए शारीरिक शोषण का मतलब अलग है और हमारी संविधान के लिए शारीरिक शोषण का मतलब टोटली अलग है। शारीरिक शोषण जो है उसके डेफिनेशंस हर साल संविधान में बदलते रहते हैं। मैंने कुछ 2-3 साल पहले लॉयर नीला गोखले के साथ, एडवोकेट नीला गोखले के साथ सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर, शारीरिक शोषण के ऊपर एक सेशन किया था। एक सेशन मैंने किया था शोषण और तलाक के अंदर औरतों के हक वगैरह उसके ऊपर। तो शारीरिक शोषण के ऊपर जो मैंने वो सेशन किया था उसके अंदर कॉर्पोरेट लाइफ, पर्सनल लाइफ, बच्चों के साथ, उन सब चीजों के बारे में बात की थी। लेकिन हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो आम अपनी जिंदगी में आपके लिए शारीरिक या मानसिक शोषण होंगी, वो संविधान में शोषण नहीं है। तो उनकी सोच अलग है। वो ये नहीं देख रहे कि किस इंसान के ऊपर क्या बीत रही है, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप अगर शारीरिक शोषण की, सेक्सुअल अब्यूज की बात करते हो तो क्या किसी ने आपको छुआ। ऑफ कोर्स साइबर क्राइम वगैरह वो सब अलग अलग पहलू है। लेकिन पहले तो I would like to invite Aaron. Aaron, I haven't got a request from you on Instagram, so please send me a request again. I tried adding you, it's not happening. तो Aaron को मैं यहाँ पर invite करती हूँ। कल के wonderful session के लिए बहुत बहुत thanks. And we are hoping that today's session, Amita, not right now. I haven't got any request from you, Aaron. Yes, now I got. Okay. I accepted. कल वाली, हाँ, okay. Now you are live with me on Instagram. Okay. Fine. So, thank you, thank you, Aaron, for the session yesterday on forgiveness. And today we will talk about forgiving people related to sexual abuse. Now, a lot of people have different definitions of sexual abuse. Abuse could be physical, it could be mental, it could be emotional, and it could yet be related to sexual abuse. सो इंस्टाग्राम पे बता दूं कि अगर आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग इस पे यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाएं। एरन, आई थिंक आई कैन हियर द एको फ्रॉम योर साइड। I know I'm not able to. The I don't know how to Instagram, stop it. no, you just have to put a headphone in it or something. I don't have a spare Do you have a headphone. mic? Do you have a mic? No. Then
the phone's volume, put it on minimum. I So put if it you've on put minimum. minimum, so that way they can hear you, they can hear me, but I will not be able to hear myself. Okay, welcome Jaya, Sonia, Deepak, and everybody on Instagram. Thank you for joining, and I hope that these videos are helpful to you. And क्या हुआ, Aaron? I'm not able to. I'll have to exit it because I don't have a spare earphone and it's Volume, you echoing. can't put down the volume. This फोन is the का वॉल्यूम max. मिनिमम कर दो. This is the वॉल्यूम, minimum. how can it be the minimum? You have to just shut down the volume of the phone. I have shut down the volume of the phone. Literally. You mean to say that the phone does not go on mute? Yeah, I've muted the phone. I've muted the microphone. Okay, then I guess you just have to end your Instagram session. Okay. Anyway, never mind. So right now, anyways, I'm talking, but otherwise it's going to be you talking. So it's okay. Right now, just keep it there. We'll see what happens. सो But आई isn't एम it going to सॉरी echo for आप people? सबके लिए दैट आप लोगों का इतना समय बर्बाद हो रहा है, और ये एडजस्टमेंट हमने पहले की और करने की कोशिश भी की, उसके लिए हमने ट्रायल भी किया, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हुआ. हाय राजेश्वरी, गीता एंड एवरीवन. नाउ कल हम लोगों ने ये बात की कि माफी, क्षमा कैसे की जाती है, ठीक है. आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि सेक्सुअल अब्यूज का डेफिनेशन चाहे कुछ भी हो, क्या सेक्सुअल अब्यूजर को माफ करना पॉसिबल है? So एरन. this is a very subjective question, हम्म. and it's individual. It's based on the individual. It completely is dependent on the individual's perception हम्म. and the way they've done it. Having said that, as a professional, I don't encourage forgiveness in the first stage. So तो आपके generally, हिसाब what से happens? शुरुआत से पहली बार, मतलब जैसे ही कुछ होता है तो उस फर्स्ट स्टेज में माफी करना मुमकिन भी नहीं है, और आप उसकी सलाह भी नहीं देते हैं आगे. बिल्कुल मैं उसकी सलाह नहीं देता हूँ क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर लोग फॉरगिवनेस को एक एक्सक्यूज या एक कारण मानते हैं, ईदर फॉर रिलीजियस पर्पस और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन और बीइंग द बिग वन एज आई मेंशन यस्टरडे. और क्या होता है कि जब हम फॉरगिवनेस पे स्टार्ट करते हैं देखने के लिए, we somehow completely ignore our true raw emotions in the whole situation. तो क्या होता है, हम ज़बरदस्ती अनकॉन्शियसली अपने आप को फोर्स करते हैं उस इंसान या व्यक्ति को फॉरगिव करने के लिए, in the hope of either being forgiven by God or spiritual evolution or just to ignore the pain. मैंने तो उसको माफ कर दिया. But in my career and my experience, I've realized that कोई माफ कर नहीं पाता है, क्योंकि जब आप उनसे ज़्यादा बात करना शुरू करते हो और if you ask the right type of questions, you will see a very intense, potent emotional charge rising up. It's very subtle. You need to catch hold of it. तो आप देखोगे कि ऐसे लोग बोलेंगे हाँ मैंने तो माफ कर दिया, अब उसके बारे में बात करना छोड़ दो. दिस इज योर फर्स्ट क्लू, क्योंकि अगर आपने उसको एक्चुअली माफ कर दिया है तो इतना तो आपको, अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू से आपको फील होगा या ना फील होगा, बिकॉज इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक एंड इट्स केस स्पेसिफिक. बट इतना चार्ज नहीं आएगा. तो क्या लोग ज्यादातर बोलते हैं हाँ मैंने तो उसको माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया, क्यों आई एम इन अ बेटर स्पेस नाउ, आई हैव मूव्ड ऑन. कभी कभी क्या होता है कि लोग एक डाइवोर्स के बाद, अगर द रिलेशनशिप हैज बीन वेरी पेनफुल, आई एम सॉरी आई वेंट ऑफ टॉपिक, लेट्स स्टिक टू सेक्सुअल अब्यूज. क्या होता है जब आप सेक्सुअली अब्यूज्ड होते हो, there's something that you're feeling within your body. आप कुछ महसूस करना शुरू करते हो. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से एज में ये हुआ है.
अगर आप एक चाइल्ड हो, if at an age when you're very young, Hmm. you're not able to process or even infer what is happening with you. Hmm. तो उसमें you know you might have a tendency of being shocked with the whole experience, being confused, not understanding क्या हो रहा है, ये इंसान क्यों क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है. There's a lot of thoughts that keep running in your mind. Hmm. एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो बच्चे होते हैं उनको किसी के पास जाने का वो स्पेस नहीं होता है. Because even if you look in certain communities and society, even today as of 2024, the word sex only is taboo. Even people who will have multiple affairs will not use the word sex. Yeah. So what happens, children के पास वो स्पेस नहीं होता जाने को बोलने के लिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ या इस अंकल या आंटी ने मुझे छुआ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे. Hmm. और अगर उन लोगों ने वो करेज ले भी लिया, Hmm. the adults are not very comfortable Talking about, speaking yes. about it. So वो उनको बोलेंगे अबे चुप बैठो, इतना forget about it, जाओ. So what happens, the child has to start understanding it all by themselves. Sometimes there is also a threat that अगर किसी को बोला then I will harm your parents. So there are a lot of layers for this. So I would highly recommend, and I feel professional help is a mandatory for this kind of issues, I because you understand. really need someone very neutral to understand where you're coming from. True. Because most of the times we want validation. Hmm. We are experiencing something within our body, but we are not able to put a word to it. कुछ हो रहा है, बॉडी में कुछ फीलिंग हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर Hmm. ना मैं बता पा रहा हूं, और अगर मैंने बताने की कोशिश भी की तो या वो लोग समझना नहीं चाहते, या इग्नोर करते हैं, या बोलते ये पूरा गंदी बात है. So as a child there is a lot of thing you go through when you're sexually abused. Now as an adult also you may go through a similar kind of thing, but it also depends on your personality. Now your Okay. personality also What do you comes mean by from your conditioning. Now for example, अगर आप एक environment से belong करते हो that? कि Hmm. ये सब चीज़ें बोलना नहीं चाहिए, Hmm. ये गलत है, ऐसा महसूस Hmm. करना अच्छी बात नहीं है, Hmm. ठीक है. तो क्या होता है, if you notice even in a society there is a lot of shame associated to the word sex. Yeah. I have personally interacted with therapists who deal with sexual abuse cases and they will not even say the word sex. That's alarming. That's alarming. Wow. So we need to know that first we need to be comfortable calling sex as sex and calling our private and genital regions for what they are. Okay? When we start doing that, we are able to at least know that this exists. Your net is Now, your now huh. getting back to the feelings, the internal feelings. When you are an adult and this is happening to you as of 2024, the adult is experiencing it, but the child within you has a particular belief system and conditioning. So many people say, आपने ये बताया क्यों नहीं, आप चुप क्यों रहे. वो हाँ. इंसान क्यों चुप रहता है, क्योंकि the child within them was not हाँ. encouraged. So physically they have grown up, but emotionally they are that particular child. So it's very inhuman, and of course it is lack of education and awareness that we ask people why you kept quiet, why didn't you speak up, why didn't you open up. See, we also need to understand that are we creating a space for someone to open up? And for someone to open up, either you need to be a professional or you need to be someone who has the right amount of education and can hold the space for you. So why I say don't go to forgiveness, because a lot of people are encouraged to forgive,
whereas actually our body is feeling otherwise. तो मेरे शरीर बोल रहा है, मन बोल रहा है कि मत करो forgive, पर religion, spiritual society is not holding the space for my pain. They are in pain. Yeah. You get it? There's a breach of trust, there's a breach of your personal boundary. Sometimes you start questioning your own identity, what's Uh, happening. 1 second. Only your voice can be heard. Malti, no volume from your side, they saying. Oh, because you put down the volume then. Can you hear me now? Can you hear them? Hear him now? Uh, can you please check on Instagram? Can you hear both of us? Can you? Okay. Can they hear me now? Uh, okay. Go ahead. But this is a very good example. Do you see? Because I don't have an extra earphone, for one of us to function, one has to maintain silence. Yes. And this is exactly what happens in a sexual abuse case. For Oh, the abuser to continue to function, the abused is forced to maintain silence. क्योंकि अगर हम दोनों ने अभी बात करना शुरू कर दिया, फंक्शनिंग नहीं होगा. तो इसको एग्जांपल लो कि कैसा. नाउ you're also you are do you see how it gets interrupted? Now जब तक आप चुप बैठोगे, people will hear me clearly. पर जिस टाइम आपने बात करना शुरू कर दिया, I have to put in more efforts to be alert. Of course, I'm giving this as an example of how I have to ensure that I need to make sure you are quiet for me to survive and function. So there is a lot of thing that plays in our mind. Yeah. आई होप आप लोगों को एरन की आवाज इंस्टाग्राम पे आ रही है. Arya, so do you get it? Now, gotcha. for me to function smoothly, it's better you keep quiet. Now, how do I ensure you keep quiet? By either treating you or threatening you. Mm, So now what happens when this child grows up, they're going through they're very confused. mm, Now suddenly you might see they don't like physical touch or anything to do with sex, they're very alert. Or maybe once they get married, they're not comfortable with intercourse. There are many, many giveaways. Now, please don't take this as a blanket rule. That's why I say this is very subjective. So, if you're someone who's not comfortable with intercourse, that doesn't mean that you were sexually abused and you don't have memory of it. That's why I say this is something you need to go with a professional because you need to understand what is happening to you. right. And unfortunately, as of 2024 today, I see a lot of things is just qualified as abuse. Lot of things. What do So you mean by that? I don't want to get into that because it's going to take us a lot of time to explain. But for the benefit of people watching this, what I can tell you today is, irrespective whether it is considered as sexual abuse or not, I would like you to first ask yourself, even if someone doesn't put that stamp mark, Hmm, when that person touched you, hmm, how did you feel? Because the same touch can be done by your lover, by your brother, by your neighbor, by your uncle, by your colleague, and right. your response will be different. Yes. Correct. When your lover does it, and if you are in love with that person, you enjoy it. But the same thing when a stranger does, you don't like it because it eventually comes down to your safety and to your preference and your association. I personally think that the intention of the person who's touching sends vibes to a woman or a child, and that makes it creepy. Again.
It also depends on the individual. We can't generalize it. No, you can't. No, you didn't. Then you didn't understand what I said. I said the intention of the person who is touching the child or the woman Hmm. sends vibes to the woman Hmm. wherein she understands that the intention is not good. It is sexually Yes, abusive intention, which is why that touch feels bad, while the same touch of the others doesn't feel bad. again, Just, my I phone's under, battery is gone, so I'll just have to put a charger. Please continue. I understood the question, but again, I will stick to my answer. It again depends on your interpretation of the touch. If you come from a background and culture where there is a clear distinguish and separation between the gender, even the touch also need not be necessary. The mere look at you may feel sexual. We cannot generalize it because there's culture, society, your upbringing, a lot of things. So maybe someone of a particular culture might feel that touch was inappropriate because of the intent. One second. On YouTube, is Aaron's voice echoing? Is anybody feeling a double voice or something? Please let me know. Because I just suddenly realized when I took my headphones off that your voice was echoing and I could hear it here. Anyway, continue, please. So the intent also depends on your interpretation of it because the intent is something you don't know. Again, it's visual, it's your senses. No, 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 no. No, that's not true. That's not It's true, not. Aaron. I can No, personally vouch for it because I have gone through it a lot of times. And I I'm not know denying that at times it. somebody who I know, somebody who's touched me in that manner hundreds of times, I've never felt bad. But at a particular time, I realized the intention was not right. And I became defensive. Gini, this is So, exactly what I'm saying. I believe you. When you're talking about your story, I believe you. My concern is when you take your story and we generalize it to the community representing or the entire women community. That's exactly what I'm saying. As of 2024, we have generalized so many things that even people who are not or don't consider it as sexual abuse have started saying there's something wrong here. That's why I say it's very specific. So if you felt that after 100 times I didn't feel it, but the first time this man touched me, there was something here. I believe you. That's exactly what I'm telling everyone who's watching today. Please don't wait for someone to validate your experience or someone to exactly. give you that tag. Hmm. If your experience is saying something, go with that experience to a professional. Go to a professional and say, I do not know why, though someone doesn't agree or say that man or that woman didn't mean it, when that person looks at me or touches me, I feel uncomfortable. Be Hmm. with that experience. You need to Hmm. learn to validate your own experience. Hmm. Because today you're saying that no, it's not like that. 100 people feel it. But Uh, huh, there are No, people people are who experience requesting it. Hindi, so I'll just explain this in Hindi कि बात ये हो रही थी कि वो कह रहे थे कि हर किसी का छूना एक गलत इरादे से नहीं होता और अ, आप उसको हर चीज को लेबल नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते, हर एक का अनुभव अपना होता है। उस वक्त वो कैसा खुद अपने अंदर महसूस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको खुद उसको अम, शोषण समझते हैं या नहीं। तो यहाँ पर एक बात हुई कि उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है एक इंसान तुम्हें किसी तरह से छुए, उसका छूना बुरा ना लगे और दूसरे इंसान का बुरा तुम्हें लग रहा है तो व्हाई डिड आई इवन ब्रिंग अप दैट? तो बेसिकली क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान आपको टच करे वो ज़रूरी सेक्सुअल अब्यूज हो। हाँ, हाँ। हावेवर मैंने वहाँ पे ऐसा इसलिए टोका
और मैंने ये कहा कि एक औरत को या एक बच्चे को पता होता है, क्योंकि जब कोई इंसान गलत इरादे से किसी को छूता है, किसी की तरफ देखता है या किसी की तरफ आगे भी बढ़ता है, तो वो जो वाइब है ना, वो जो एनर्जी फील्ड है, उसके अंदर वो नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। और भले वो उस इंसान ने 10 बार आपको गले लगाया हो, लेकिन एक बार अगर वो गलत इरादे से आपको गले लगाएगा, उसके गले लगाने से पहले आपको पता चल जाएगा कि इसका इरादा गलत है। तो ये होता है, और मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है, और एक बार नहीं कई बार हुआ है, तो मैं हर तरह की इस भावना को और एहसास को पहचानती हूँ। तो ये नहीं है कि एक इंसान ऐसे ही कह दे। हाँ, अगर कोई जानबूझ के झूठ बोले तो अलग बात है। दूसरा एरन ये कह रहे हैं कि दूसरों के कहने के लिए इंतज़ार मत करो कि अच्छा उसने तेरे साथ ऐसा किया, नहीं, नहीं ये तो सेक्सुअल अब्यूज़ है। नहीं, तुम जब वो जो कुछ भी हो रहा था, तो तुम्हारे अंदर तुम्हें क्या महसूस हो रहा था, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाउ वर यू फीलिंग? आपके अंदर क्या भावनाएँ जाग रही थी? क्या आपको अच्छा लग रहा था? क्या आपको घिन आ रही थी? क्या आपको बुरा लग रहा था? क्या आपको डर लग रहा था? क्या आपको लग रहा था कि आपकी अस्मत, आपकी इज़्ज़त, आपकी ज़िंदगी खतरे में है? क्योंकि हर एक के अंदर वो एक एंटीना होता है, जो अलर्ट हो जाता है जब आपके साथ कोई गलत कर रहा हो और गलत इरादे से कर रहा हो। क्योंकि एक ही चीज़, एक इंसान ने आपको सिर्फ़ छुआ, ठीक है? उसने सिर्फ़ छुआ, आपको बुरा लगा। लेकिन वहीं आपका पति, आपका बॉयफ्रेंड, चाहे वो बचपन में हुआ हो, बड़े होके वो लोग तो इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ करेंगे, पर आपको बुरा नहीं लग रहा ना। तो वहाँ पर इंटेंशन, वहाँ पर रिश्ता और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू। सो ये ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड योर understanding and interpretation of the intent also comes a lot from your social and cultural background. Yeah, that I can agree with you. So what I'm saying here is, But abuse, instead of ab validation, हाँ, one instead of a validation, go with your experience. हुँ, Because क्या होता है, for example, one person is telling the other person, मुझे अच्छा नहीं लगा इसने मुझे छुआ. हुँ, What happens? There's a possibility the other person may say, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो हर इंसान के साथ ऐसा करता है. So what हुँ, happens? We start questioning our own intellect and हुँ, experience. So what I'm again stating, at the cost of sounding repetitive, that हुँ, if you're feeling something, it doesn't matter if someone agrees or doesn't agree. totally. Explore that feeling. हुँ, Even if someone tells you, even a professional comes and tells you, yeah, but I don't feel that qualifies as sexual abuse. Okay, हुँ, maybe it doesn't qualify sexual abuse, but I want to explore that feeling, that what happens to me internally when this हुँ, person touches me this way. हुँ, That is empowering you. हुँ, Because if you're constantly going to go at labels, is हुँ, does that mean that आपका जो अनुभव है वो सिर्फ उसी टाइम वैलिड होगा अगर कोई आपको बोलेगा हाँ नहीं, ये करेक्ट? नो. नहीं, like for example, I told you that I consider somebody flashing their dick at you as sexual abuse. You said no, Yeah. that doesn't qualify because legally it doesn't qualify, and it is not sexual abuse because he's not touched you. But I find it sexual abuse. I find it mental abuse, emotional abuse. Continue. Yeah. So getting back to this question, my answer was there's a lot of layer to it, because when someone flashes their genital region to you, my first question before jumping this is sexual abuse would be, okay, what happened to you? And if you notice you answered, I feel threatened, I don't Scared. like it, scared. Scared. So my answer response to that was, we need to explore this part of you that is feeling threatened and a part of you that is scared. क्योंकि जब हम इन दोनों पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे, we will get more clarity. But if I I beg to differ because a 35-year-old man flashing his dick at a 12-year-old girl, obviously his intention was wrong.
Had the circumstances been different, probably he would have raped her, right? Okay. So my question to you So there would is be, no question only there that it no, was with the intention of abuse, no. because the child felt threatened. It was mental abuse. Okay. The child felt threatened. I understand. What is the purpose of the conversation? Are we here to see if it qualifies as sexual abuse, or are we here more to see How do you what forgive? can we do for the child? Huh. Which is What more can we? important here? Yes, that's more important. How does the Because, child move ahead, yeah, forgive, accept, whatever because it is? that doesn't mean I'm discounting the abuser here. But what I've Okay. noticed with a lot of talk shows and people is they're constantly focused on the abuser, Hmm. which is good. We Hmm. need to identify certain behavioral and character traits. Hmm. My question is, what can we do for the victim? Hmm. Apart from praying for them, what action can we do? What Right. can we do for the child? Hmm. Because if I'm going to validate you, ठीक है. After that, what? What about the child? Hmm. Can we stop people from abusing people? No, we can't. We live in a world where both exist. Would you Hmm. agree with that? Yes. Yes. But we can do something through such sessions to educate people. Now, for example, the child might go to a particular professional who doesn't consider this. Hmm. For example, now you are saying it. Now, in 7 billion people, not everyone is going to watch a show, Hmm. but there will be in one country a girl who is going through it and goes to a professional, and the Hmm. professional says, मुझे तो नहीं लगा ये. So does that mean her experience is not valid? No. So what I'm telling you here through this session is whether someone agrees to you or not, Hmm. I felt that. I was not comfortable him flashing his genitals to me. I didn't feel comfortable. Can we explore my discomfort? Do Right. I need to work on my boundaries? Do I need to work on the cultural upbringing? Do I have a belief system that men are like this and women are not like this? Because Hmm. if you notice, when a Hmm. woman flashes herself, generally, I'm not Hmm. going to say the entire population, but a man likes it. Yeah. Of course. Correct? Yeah. So Yeah. again, there are many things to consider here. Yeah. And this generally happens in abuse. Abusers generally want to get validation for their pain. Hmm. My request to y'all is please validate your own pain whether someone does it or not. You Agreed. don't doubt your experience. Yes. Because what is happening now, you are questioning your own experience that ये तो मेरे साथ हुआ था, आप क्यों इसको मान नहीं रहे हो? Hmm. मैं तो मान लूंगा. Hmm. कितने लोग मानेंगे? फैमिली में कितने लोग मानते हैं? फिर आप क्या लोग करोगे? माने या नहीं माने, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. फॉरगिव करना, एक्सेप्ट करना, या अपने आप को उस Absolutely पेन not. से हील करना इज मोर इम्पोर्टेंट. Yeah. Should I forgive my abuser? In my opinion, forgiveness should be a byproduct. And for forgiveness to be a byproduct, I need to first ask you the question, what is the need for you to forgive someone who has abused you? लेट मी ट्रांसलेट दैट. तो एरन के हिसाब से, माय वॉइस इज echoing in my ears only. एरन के हिसाब से एक इंसान जब आपके ऊपर शारीरिक शोषण करता है, तो उसको माफ करना आसान नहीं है, लेकिन अपना उपचार अगर आप इस तरह से करते हो What is upchar? कि अब हीलिंग, अपनी हीलिंग या काउंसलिंग आप इस तरह से करते हो कि उसका बाय प्रोडक्ट, के उसकी वजह से एक दिन आएगा जब आपको एहसास होगा कि आप उस हादसे से आगे बढ़ गए. वो हादसे से अब आपको दुख नहीं होता, या होता भी है तो आपने माफ कर दिया. वो चाहे आप ये भी सोचो कि कई बार होता है कि मैं नहीं माफ कर सकती. मतलब किसी ने मेरा शारीरिक शोषण किया, और इस तरह से किया, इतनी छोटी उम्र में किया या बड़े होने के बाद भी किया. मैं नहीं माफ कर नहीं पा रही. तो ठीक है, माफ नहीं कर पा रही, लेकिन जैसे इन्होंने कल उसके बारे में बताया था, प्रोग्रेस के बारे में कि आगे कैसे बढ़ना है. आगे तो बढ़ना चाहिए ना ज़िंदगी को. इंसान एक हादसे को लेकर एक जगह पर अटक तो नहीं सकता ना अपनी ज़िंदगी में.
आगे तो बढ़ना है। नहीं, अटक सकता है। हम्म, अगेन, नहीं मतलब फ्री विल। अटकना चाहिए नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अटकना चाहिए नहीं, दैट्स व्हाट आई, अटकना। you shouldn't get stuck, you can, but you shouldn't, this is what I meant. No, it's okay even to get stuck. So I generally ask people first thing, Hmm. what is the need for you to forgive this person? That's my first question. For your own peace. How about directly approaching how to be peaceful without the need to forgive him? Has that option ever been given to people? No. So again, listen to you carefully. See what you did, Guinea. Very important. Hmm. When I asked what is the need to forgive, you said for my own peace. Hmm. तो ये हमें बिठाया गया है कि जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे पीस तो नहीं आएगा। नहीं, बिठाया नहीं गया है, लेकिन जब आपकी अगर आपके साथ कुछ हुआ है, हम्म, आज नहीं तो कल वो आपके सामने आता है, हम्म, आपके रिश्तों में भी कभी-कभी उभर आता है। किसी हम्म, ने कुछ किया, आप हम्म, एक रिश्ते में हैं, उस रिश्ते में अगर उसने ठीक वही चीज़ की तो आपको बुरा लगेगा और आपको वो बात याद आएगी। तो कहीं न कहीं आपको दुःख होता है। कई बार किसी और का दुःख देख के आपको अपना दुःख याद आ जाता है और जब याद आता है तो बहुत दुःख होता है। वो दुःख मुझे दोबारा महसूस नहीं करना, इसलिए मैं कहूँगी कि अपने मन की शांति के लिए, ताकि उस तरह की यादें वो दुःख ना दें आने वाले समय में और मैं आगे बढ़ सकूँ, उसके लिए आई फील दैट to some point, whether it is forgiveness or whether it is forgetting, it's necessary. या तो मैं भूल जाऊं, मैंने तो भगवान को बहुत बार बोला है कि कई बार मतलब कि आई हैव प्रेड, लिटरली प्रेड टू गॉड, प्लीज टेक माय मेमोरी अवे, आई डोंट वांट टू रिमेंबर so many things of my life because they hurt and I have learned to rise above. That's another story. Rising above doesn't mean forgiving, it doesn't mean that the pain is gone. There's a difference. तो आप उससे ऊपर उभर सकते हैं, भूल सकते हैं। भूलेंगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन कभी न कभी जब वो बात याद आएगी, ज़रूरी नहीं आप मुँह से बोल लो। मैं कई बार बोलती हूँ कि हाँ, मैंने माफ़ कर दिया। जिनको कर दिया मुझे पता है मैंने कर दिया, लेकिन कई लोगों को मैं आज तक सालों बाद भी माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ। और मुझे ऐसा लगता है ये मेरी अपनी सोच है कि जब तक मैं उन्हें माफ़ नहीं कर दूँगी, मेरे मन में वो खटकता रहेगा काँटे की तरह। यू अंडरस्टैंड? काँटे की तरह खटकेगा। That's why I say everyone's response to the situation will be different. In my opinion, and how I function with clients is I don't encourage them to forgive. I don't give them that option only that you need to forgive. What I ask them is, what is the need for you to forgive? हुँ, And for example, like how Guinness said, one reason is for my peace of mind. My next follow up question is, what makes you think that your peace of mind is dependent on forgiving? And what do you mean by forgiving? when So I some so people when get, I talk about forgiveness, I mean when I speak about that same incident or it comes to hmm, my mind, I don't feel the pain. That is my idea of forgiveness. okay. And I don't feel anger towards. Does not mean that that person can come and repeat what they did. No, no way. But So, hmm, that person, if and when that person comes in front of me, it will not, uh, it will not make me anxious. I will not feel the need for revenge or anger. That is what I mean by forgiveness. yeah. So, as I said, everyone's interpretation of forgiveness is different, and it's important to honor each one's interpretation. What I basically encourage is to get in touch with your raw emotion.
So, taking this example, if you notice, the initiation of the forgiveness is basically not to feel a particular emotion at a later stage, right? Hmm. Yes or no? Yeah, You yeah. don't want it to hinder your relationship. You don't want to get revenge. You don't want to. So, the initiation of the forgiveness is coming from a space of you being capable enough to handle a particular emotion in the future. Is that what I've heard from you? Yes. My question to everyone who thinks in a similar format, how Hmm. about working on those emotions that you feel may arise in the future today without the need to even forgive? How about that option? Hmm. How about getting into, I am scared I'm going to get angry, I'm scared I'm going to have revenge, I'm scared I'm going to have so and so emotions in the future. No, no, no. I'm not Let's scared. bring the future now. I am not scared. Whatever, for people, Huh. we're not talking Huh. about you, you're in general how Huh. people Yes. feel Totally. that if I don't forgive, this is going to happen. Generally the concept of people, majority is अगर मैंने माफ नहीं किया ये होगा. And if you speak to 10 people, 10 people will give you different answers. What answers I have heard in my career is, अगर मैंने forgive नहीं किया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी. अगर मैंने forgive नहीं किया तो मुझे दर्द होगा. अगर मैंने forgive नहीं किया तो भगवान मुझे माफ नहीं करेगा. I cannot give you an answer for everyone who's watching this here. However, Hmm. what I can give you is few questions to ask yourself, Hmm. that what is the need for me to even forgive to achieve something what I want in return of that forgiveness? How Hmm. about going directly over there? Hmm. So if you feel that unless I forgive, क्या हुआ? I will have to exit one, I feel. Okay. So if you feel that you need to forgive in order to be at peace, good for you. I don't resonate to that. That's not how I work with my clients. But Hmm. if it resonates with you that yes, can I explore an option of feeling peaceful, feeling blissful, not feeling charged, without the condition that only I'm going to feel this way if I forgive someone, then this session is for you. Because what I've So, noticed that when people force, 1 minute, when people force, अब जबरदस्ती forgiveness को मन में रख के ये सब करते हैं, वो healing नहीं होता है. वो थोड़े साल के बाद और भयंकर तरह से वापस आता है. And hmm. then people say, Yes. अरे मैंने तो कितना healing किया, मैंने तो कितने मन्नती मांगे, because you have not addressed the raw emotion. You get it? If you genuinely address the raw emotion, the probability of you feeling this will be very, very less. Hmm. But what is happening? We are starting the initiation of the process of the healing. हम शुरुआत ही कर रहे हैं हमारी healing के with the condition of forgive करो. Hmm. My thing is, start मत करो, यहाँ पे लाओ. Hmm. स्टार्ट विथ योर रॉ इमोशन, फिर फॉरगिवनेस पे पहुंचो. तो मैं नहीं बोल रहा कि आप फॉरगिव मत करो. आई एम ओनली Hmm. टेलिंग ABCD से स्टार्ट करो, फिर सेंटेंसेस पे जाओ. उल्टा Hmm. मत करो. एंड आई Right. विल टेल यू देयर विल बी अ डिफरेंस. You've एंड seen अगेन, results. You've seen results. if I didn't see results, you think I would be invited and I would talk with so much of conviction? I agree. Okay. Again, it's not about me. If you feel that no, I Huh. want to forgive first, good for you. But then genuinely you need to ask yourself, am I at peace? And I have Okay. interacted with such people. They feel they are at peace, but they are in pieces. No, they're not. So, okay, Because what is something forced? we've spoken a lot about whether one should forgive or not. But supposing somebody decides to forgive, how Hmm. can one do that? Let's talk about that.
Though I don't resonate with it, but if someone says, no, I still want to forgive them, Hmm. I most probably wouldn't take this Forgive them client. or move on. Forgive them or No, move I on. wouldn't entertain this client because I Matlab? wouldn't entertain someone who I know is going to bypass their emotion No, to I'm not just feel talking about good. bypassing. I'm not talking about bypassing. I'm talking about healing. I'm talking Ha, about healing, okay. byproduct Ha. of which So is if forgiving. so now if suppose says I want to forgive this person, but I want to process my pain and forgive, brilliant, I say. Hmm. So my first question to this person is, how did it feel that you went through this experience? How did that make you feel internally? I would use the word internally because it helps. Because generally, when you say, how do you feel? Then, no, 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 no. When you use the word internally, it brings you inside. Hmm. How did it make you feel that Hmm. you had to go through this? I didn't like it. Okay. And what about it you didn't like? I didn't like that person touching me. I see you're angry. Would you like to speak about it? There's nothing to speak about it. I've forgotten it. Okay. Hmm. It takes time, it takes patience, it takes sensitivity to address it because they are in a lot of pain. Get it? So I'm Yeah. not denying your pain. I'm not denying your pain. All I'm saying is you need to go through that pain. And the day you go through that raw pain, believe me, you will get a sign of relief. Because sometimes we use forgiveness to bypass that pain. Hmm. So now, for example, of course, I wouldn't do this in a personal session, Huh. but for the benefit of the people watching here, when Guinea would start crying, I wouldn't talk. I would just allow it to flow. I would give her time because what happens, Hmm. sometimes you just need someone to hold the space Hmm. for you to just get it out. Hmm. That time, words is damaging more than soothing. Hmm. So, very gently, after some time, I would ask her, would you like a glass of water? Hmm. What happened to you? I saw you, tears were rolling down. Hmm. And I would again pause. That's why I say you need professional help because processing pain, as ironic as it sounds, is painful. Trust me, processing pain is painful. But that Hmm. pain will help you to be more empowered. Hmm. That pain will help you, if you work on it, to more identify people. Hmm. And just think of it once. Hmm. Someone violated your personal boundary. Hmm. किसी ने आपके साथ जबरदस्ती किया, किसी ने आपके साथ आपके इजाजत के बिना कुछ किया, Hmm. आप किस हक से बोल रहे हो उसको फॉरगिव करो? मतलब यहाँ पे एब्यूजर का अकाउंटेबिलिटी किधर है? No, just think as a society uh, how messed up we are. That the person who's abusing you not only had to the victim had to go through the abuse, now the additional burden of forgiving you for what? Not just that. When spiritual, so-called spiritual intelligentsia says you attracted it in your life. A child of 4 or 5 or 6 or 12. How is that person So that's attracted it a in very their good life? question. Thank you for asking me that question. It was there in my pointers. Please don't include spirituality and religion when it comes to your healing. Don't do that mistake. Now, let me give you a best example to remember this, and you can quote this to anyone. Hmm. A child is crying to go to school, and the child is just 4 years old. Or, for example, think a 4-year-old child hits his leg and he started bleeding. Hmm. ठीक है?
Generally, spirituality tells you, so what was in your space that attracted this in your life? Correct? Yes or no? Do you think that 4-year-old child requires your logic or requires a hug at that moment? Or whatever, a hug to take care of the wound? What is it? Hmm. The first thing, Mhm. and if you really notice people who are not much into spirituality, Mhm. when someone falls sick, their first question is, how are you feeling today? It is the pseudo spirituality people who will claim to say, oh, so what was in your space? How did you attract it? So the pseudo spirituality people who are now portraying themselves as God, and there is a huge percentage of people who want to treat them as God because they don't want to take accountability for their own healing. Good for you. If that is something that suits you, good for you. I'm here to give you an option that you need to take charge of your life and you need to ask the appropriate question. So if a 4-year-old hits his leg, you cater to his or her needs. But if a 50-year or a 40-year-old hits his leg, you ask that person, how did you get hurt? You check if that person was careless or that person was not mindful. What was it? The issue is spirituality is Uh, using that same formula for everyone. they say they can't hear your voice. Let me exit I one think let platform. me just shut down this YouTube, this Instagram thing Yeah. because half the people can't hear you. I don't know why. I don't understand. Okay, so never mind. So, do you get it? Spirituality cannot be used. You need to look at their emotional maturity also. Hmm. That's why I focus on the emotional age. A Hmm. man can be 50, a woman can be 60, but their spiritual age might be, their emotional age might be 2 years old. Yeah, You I get understand. it? I The agree. problem is So people are not in the how do emotional I, age. sorry, I'm sorry to cut you, Aaron. How do I translate this entire thing in Hindi now? I will What are translate it. the key points? If you can give me I the will key translate. points, I'll translate it. तो जब गिनी ने बोला कि स्पिरिचुअलिटी बोलता है कि जब आपके साथ ऐसा कुछ अनसुनी या हुआ है कि जो नहीं होना चाहिए था कि आपने कभी ना कभी इसको अट्रैक्ट किया था ये आपने सही अपनी बात ज़िंदगी में इसको आकर्षित नहीं क्यों किया? कि मतलब नहीं ये आपके साथ कुछ सही गलत बात हुआ है तो आप ही ने उसको अपनी ज़िंदगी में आकर्षित किया। अगर आपको याद होगा जब मैं पा के साथ लॉ ऑफ वन मैंने शुरू की थी तो तीसरे, चौथे या पता नहीं 8वें, 10वें सेशन में किसी एक सेशन में मैंने पा से यही सवाल पूछा था कि एक 4-5 साल का बच्चा अपनी ज़िंदगी में इसे कैसे अट्रैक्ट करेगा? अब लॉ ऑफ वन पूरी खत्म होने के बाद हाँ, बहुत सारी चीज़ें सोल कॉन्ट्रैक्ट ये वो कैटलिस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन क्या सच में एक इंसान आपके साथ अगर कुछ हुआ है ऐसा, तो आप माफ़ कर सकते हो? या आप में उतनी भावनात्मक ताकत रह जाती है कि आप किसी को माफ़ करो और उन बातों को भूल जाओ? तो द थिंग दैट यू वर टॉकिंग अबाउट इज़ के स्पिरिचुअलिटी में जब ये लोग ऐसा बोलते हैं तो ये बहुत ही इनसेंसिटिव है। किसी को ये बोलना कि एक बंदा तो दुःख से गुज़र रहा है और आप उससे पूछ रहे हो, "यू अट्रैक्टेड इट इन योर लाइफ" तुम्ही ने इसे अपनी ज़िंदगी में आकर्षित किया, तो क्यों किया? इसमें तुम्हारे लिए कुछ सीखना होगा। क्या सीखना होगा बे? 4 साल का, 6 साल का, 10 साल का बच्चा क्या सीखेगा गिनी इसमें से? I would like to tell everyone who is watching this spirituality actually in olden times were discussed with only a few number of people who were monitored on a regular basis. That is why you notice a guru had only few students. Today, spirituality is convoluted. Spirituality is no more spirituality, it's become a business. Yes, I agree. Please understand one thing that for children, they feel that life is easy. That's why if you notice a child generally say, I want to become like an adult. Why? Because maze maze. But an adult knows that they have to work,
they have to earn, they have to pay bills, they have to do a lot of things. Correct? Now, spirituality, what is happening in today's world is they're clubbing the adult and the child consciousness and they're making it one. They are not realizing that certain information shouldn't be revealed because the person is not ready. For example, and this is the only example that I can think of as of now, when children ask us how are children, how, from where do children come, we say from God. कैन यू से इन हिंदी? जब हम सोल्डिंग। पूछ जब बच्चे पूछते हैं बच्चे कहाँ से आते हैं, हम जनरली बोलते हैं भगवान देते हैं। हम क्यों बच्चे को नहीं बोलते कि नहीं दो लोग मिलते हैं फिर ऐसा होता है वैसा, व्हाई डोंट वी से इट? बिकॉज their level of awareness, their ability to comprehend it, their receptivity and understanding their maturity, because if I actually start explaining a child how a child is born, it will shock them. यस। So हम क्या बोलते हैं, वो तो भगवान की देन है। कि ऑफ कोर्स भगवान की देन है पर आपका भी एफर्ट है उसमें। But now suppose a 20-year-old man or woman asks me how are children born, can I say that is God gives it? No. So spirituality is there. Yes, at a level you do attract it. But that information is not to be used when you're healing yourself. There are layers to it, and that attraction, what they're talking, is a different type of attraction. There is a soul ऑन द contract. सोल There's so लेवल। many layers, so many layers. That is why I refrain from giving a yes no answer. So please understand, when you're healing, stick with the raw emotion. अगर आपको गुस्सा आ रहा है कि किसी ने आपके साथ छेड़छाड़ किया, तो उस गुस्से को महसूस करो, शरीर में कहाँ स्टोर किया है उसको देखो और निकालो अपने सिस्टम से। नहीं ये तो मैंने अट्रैक्ट किया, ये सब में मत जाओ। This is what a lot of people, I see a lot of spiritual therapists who do this mistake. So what is in you? What is in you? I don't care what is in you. If someone has crossed their boundary, you very well redefine your boundary. राइट। सो But हाउ डू I यू हील? also know, yes, I also know a certain percentage of people who would love such spiritual therapists because they don't have to take accountability. Because when you start saying, I do not want you to touch me in this way today onwards, you are going to lose people. There is going to be a reaction. So, in a therapeutic setup, I help you to become more empowered, skilled, resourced to handle the situation. What the world is expecting a certain percentage that you should change. आप समझो कि आप मुझे टच मत करो, ये नहीं होगा. It is a harsh reality, but this is the truth. So let's start acknowledging, having boundaries, and making sure the abuser faces a certain type of repercussion so that it doesn't continue. ओके। You got it? समटाइम्स So, दैट्स नॉट forgiveness. पॉसिबल। Sometimes it's not possible, no. It depends again from culture. For example, if you're नहीं, मेरा dependent कहने on का some. मतलब है कि जब एक Hmm, बच्चा छोटा होता है, उसके साथ hmm, कुछ कोई बदतमीज़ी करता है, उस वक़्त बच्चा चुप रह गया। उस वक़्त वो किसी को पहली बात तो बच्चे के अंदर वो डर, लेट मी कंप्लीट, hmm, डर hmm. पता नहीं क्यों होता है कि मैं किसी को बता नहीं सकता। शर्म, मतलब ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हुई है, जबकि जब बच्चे से कोई गलती नहीं हुई है, गलती करने वाला दूसरा इंसान है, लेकिन डर लगता है कि अगर मैंने बता दिया तो मुझे ही डाँट पड़ेगी। और No. उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है और उसे समझ में आता है कि मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई थी, गलती उस इंसान ने की थी। तब तक वो इंसान कहाँ से कहाँ निकल गया कोई पता नहीं, उसको कहाँ से कोई सज़ा मिलेगी, कुछ सज़ा नहीं दिलवा सकते कभी-कभी आप। तो सज़ा नहीं दिलवा सकते या रिperकशन नहीं हो सकता, तो ऐसे में वो सब तो नहीं हो सकता, लेकिन इंसान इस चीज़ को अपने अंदर कैसे उसको हील करे, उसका उपचार करे और उससे आगे बढ़े, वो मेन मुद्दा है। So, children are not accountable for their healing. Adults are. यस। And getting back to your statement that पता नहीं बच्चे को डर क्यों लगता है,
बच्चे को डर लगेगा और एडल्ट को भी डर लगेगा. हम्म, If suddenly someone gropes you, you're not just generally going to say, "Oh wow, no." Your first reflex is this, like, "What the hell राइट. happened to me?" हाँ, So राइट. please don't be under this impression that if you're an adult, डर नहीं लगेगा. डर लगता है. It's one of the response of humans. हम्म, But there's a difference in an adult and a child. हम्म, When a child goes through it, the adult is responsible. And I can't speak about your experience, Gani, but I can definitely speak about my experience and my environment. Not everyone is comfortable talking about sex, हम्म, and children are not encouraged, even in 2024. यस. So, in such a case, I hold the adults accountable for the child's safety. हम्म, But as an adult, you are accountable for your healing. राइट. So there's a difference with a child and with an adult. But what happens, most of the adults that come for session have that unhealed child within them. राइट. So when you address a child, you can't make the child accountable. You understand their pain. But यस. then you connect it to the adult to hold accountability for, as of today, how am I going to live my life? हिंदी. तो जब बच्चा डर रहा है, बच्चे भी डरते हैं और एडल्ट्स बड़े भी, भी डरते हैं. बड़े भी मतलब डरते हैं. ऐसा तो आप मत, बेसिकली अगर किसी के साथ भी होगा, तो वो बच्चा हो या बड़ा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हर इंसान को एक पल के लिए शॉक लगता है और डर आपको बैठता शॉक है मन में. लगेगा. आप खुद ही समझो, आप घर पे हो या बाहर हो और सडनली मैंने आपको दबोचा, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? डर होगा. इट इज लाइक, अगर डर भी नहीं होगा, सडनली इट इज समथिंग अननोन टचिंग योर बॉडी, even if it is your own husband and he does it on a regular basis, then it's okay. हुँ, But now suppose your husband is there and someone else is there. If suddenly someone, it is going to, again, it depends who's doing it. राइट, Got it? राइट. And how या. frequently. So then, okay. So please आप ये समझो, भले आप बड़े हो या कोई भी एज का हो, आपका रिस्पॉन्स होगा सडनली कि क्या हुआ है. हुँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वीक हो या स्ट्रांग हो, ये एक रिस्पॉन्स है. राइट. कोई भी सडन थिंग इज अ रिस्पॉन्स. हुँ, बट एज एन एडल्ट, हुँ, आप अकाउंटेबल हो अपने हीलिंग के लिए. हुँ, एंड फॉर द चाइल्ड, अनफॉर्चुनेटली जब आप बच्चे थे, आपके एनवायरनमेंट ने अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया है. हुँ, उसके लिए वी नीड टू होल्ड द स्पेस टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वेंट थ्रू इज वेरी अनफॉर्चुनेट. हुँ, So please understand, I have full compassion to the child within you that had to go through this all by himself or herself. There is हुँ, no doubt in it. In हुँ, the entire session, I'm again telling you, at no way if I've given you that impression that the child within you shouldn't have compassion. हुँ. My question is to the adult, the grown adult, are you willing to take accountability तो of your एरन life यहाँ and forgiveness? Getting एरन back to यहाँ forgiveness. एरन यहाँ ये कह रहे हैं कि होता है, कई लोगों के साथ बचपन में होता है, कई लोगों के साथ बड़े होने के बाद होता है और जब भी होगा आपको डर भी लगेगा, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको दुःख भी होगा। एक बच्चा इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए उसके आस-पास जो बड़े हैं, वो ज़िम्मेदार हैं कि बच्चे को इन चीज़ों से गुज़रना पड़ा और ये दुःख झेलना पड़ा। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, अगर आप बड़े हो या जब आपके साथ बचपन में अगर कभी कुछ ऐसा हुआ है और आप बड़े होते हो, तब ये आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि आप अपने अंदर के उस बच्चे का इलाज क्या करवाते हो मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर? आप उस बारे में क्या करते हो कि उस बच्चे को तब जो सहानुभूति और प्यार या मिलना चाहिए था, जो उसकी बात उस वक़्त किसी को समझनी चाहिए थी, वो तब नहीं समझा तो क्या, अब तो कोई समझ सकता है। तो अब क्या आप कुछ ऐसा करते हो कि आप किसी से जाके इस बारे में किसी काउंसलर से या हीलर से बात करो और अपने अंदर के उस बच्चे को कुछ सांत्वना मिले? प्लीज़ कंटिन्यू। और ये भी हमें समझना है कि हर बार आपका रिस्पॉन्स एंगर या सब नहीं होगा. कभी कभी क्या होता है, इट्स कॉल्ड डिसोसिएटेड, विच आई डू नॉट नो द हिंदी वर्ड.
मतलब कभी-कभी अगर आपके साथ कभी-कभी हो भी जाएगा, कभी-कभी आप उस चीज़ से, उस भावना से, अनुभव से खुद को कटा हुआ हाँ, महसूस करते हो। तो आप क्या कट होगा, जाते हो हाँ, आप क्योंकि आप अगर मानना ही होगा नहीं भी ना, चाहते। तो आप बोलोगे नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ, आप मानना ही पर नहीं चाह रहे हो। पर आपके आजू-बाजू बोलेंगे क्या बोल रहे हो? उसने तो इतना ज़ोर से आपको टच किया, लाइक नहीं ऐसा नहीं। दैट शुड बी योर क्लू दैट मे बी दिस पर्सन इज़ डिसोसिएटिंग। हुँ, तो देयर आर मेनी रिस्पॉन्सेज़। आप प्लीज़ इस 4 रिस्पॉन्सेज़ को पकड़ के आगे मत बढ़ो कि ठीक है मेरा तो 4 में नहीं हुआ तो मैं सेफ हूँ। नहीं, प्लीज़ वैलिडेट योर एक्सपीरियंस, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि what happens is, now when we are talking about sexual abuse, if I can touch on narcissistic abuse in a sexual way, हुँ। most of the time with narcissistic personality people, the people close to them experience something very different from the outsiders. So हिंदी। you might tell, वो कह रहे हैं कि जहाँ शारीरिक शोषण की बात आती है, वहाँ पर एक थोड़े तौर पे वो नार्सिसिस्ट लोगों के बारे में भी बोलना चाहेंगे कि नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं, दुनिया के लोग उन्हें कुछ और समझते हैं, क्योंकि वो दुनिया के सामने कुछ और होते हैं। प्लीज़ से दैट इन हिंदी हाँ, सो दैट इवन पीपल तो कैन क्या अंडरस्टैंड। होता है जैसे आपका एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप है, मे बी वो सेक्सुअली आपको, या लेडी मैन और वुमेन एनी जेंडर इज अफेक्टिंग योर, sexually abusing you, but the same person to the next person will be in a very loving way. मतलब So कि when you, पहली बात तो हाँ, ये कि नार्सिसिस्ट का मतलब आई थिंक एरन बेहतर है कि आप एक हाँ, शॉर्ट में उसका थोड़ा मतलब समझाओ, I क्योंकि don't बहुत सारे want लोगों to even give the definition that, but you can Google it because नो that's बट another पीपल whole thing. पीपल No, there वोंट are many अंडरस्टैंड। traits for it. There are आई many traits. अंडरस्टैंड It will not बट make, I will not be able to give you a definition. So ओके, one is नार्सिसिस्ट grandiose, लोग मोटे one is तौर पे, entitlement. हाँ, अगर मैं बोलूँ तो नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो गलती खुद करते हैं और उसका इल्ज़ाम आपके सर पे डाल देते हैं और हमेशा आपको दुःख देते रहते हैं, पर उनको नहीं लगता कि मैंने दुःख दिया। वो तो कहेंगे this is मैंने क्या one of किया? the traits. हाँ, To ये qualify, एक there are number of traits. This is one ऐसी of the trait. हाँ, ऐसी बहुत सारी ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं उनके अंदर, अवगुण होते हैं उनके अवगुण अंदर, गुण में, हाँ, जिसके वजह से उनको नार्सिसिस्ट बोला जाता है। तो नार्सिसिस्ट के जो लोग होते हैं, उनके इस तरह की बहुत सारी आदतें होती हैं। उनको खुद को नहीं पता होता कि वो नार्सिसिस्ट हैं। उनको खुद को so भी एहसास नहीं होता। उनके so I लिए want to आपका just say लॉजिक this. का कोई हाँ, मतलब नहीं है। लेकिन यही नार्सिसिस्ट जब आपके साथ शारीरिक शोषण करता है, तो आपके साथ चाहे वो आपका पति है, बाप है, चाचा है, मामा है, पड़ोसी है, जो भी है, भाई है, दोस्त है, जो भी है, आपके साथ जब वो ये व्यवहार कर रहा है, तो आपके साथ तो वो बुरा है, पर दुनिया को के साथ उसका व्यवहार कुछ हाँ, और होगा तो और क्या दुनिया बोलेगी, होगा, "अरे नहीं, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो ऐसा करेक्ट। है ही नहीं।" और आप बोलोगे, "अरे नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया।" मानेगा ही नहीं कोई। और So that's why I'm telling वो you, आदमी या औरत दूसरों के सामने साफ मुकर जाएगा, "अरे कहाँ बेटा, तुम तो गलत समझ रहे हो।" नो नो, वो इंसान नहीं मुकरेगा। सो उसका जो एक्सपीरियंस है दो जन के साथ विल बी वेरी डिफरेंट। सो इवन व्हेन यू वॉइस आउट सेइंग अरे मेरे साथ तो ही इज वेरी अब्यूसिव, हाँ, when you confess this to another individual, that person will like, no, he's very loving otherwise. When I was dating him, he was very loving. यस। Because what is going to happen, they generally don't behave in the same manner. हुँ। So you might start questioning yourself. That is why I request everyone, हाँ। start asking your experience. क्योंकि ओह! दिस इज़ आप वेरी अगर किसी इम्पोर्टेंट, 1 आप सेकंड, दिस इज़ किसी वेरी को इम्पोर्टेंट। किसी के दूसरे के साथ जाओगे, वो बोलेगा अरे मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। डज दैट हाँ, मीन योर एक्सपीरियंस इज इनवैलिड? नहीं, लेट मी एक्सप्लेन दैट। एरन क्या कह रहे हैं, कई बार क्या होता है, ऐसे लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके साथ तो वो जो व्यवहार कर रहे हैं, वो हर एक के साथ उनका व्यवहार अलग होता है। आपके साथ एक तरह से व्यवहार कर रहे हैं। आप जब किसी और को बताओगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो सामने वाला इंसान बोलेगा नहीं, नहीं वो तो ऐसा है ही नहीं, मेरे साथ तो वो बड़ा अच्छा है या ऐसा है या वैसा है। उसके चलते कभी-कभी इंसान खुद पे शक करने लगता है
कि पता नहीं, ठीक है, हो सकता है मैं ही कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हूँ, या पता नहीं मैंने ही कुछ गलत समझ लिया। हाँ, ठीक है भाई, होगा अच्छा इंसान। तो एरन कह रहा है दूसरों के कहे पे कभी मत जाओ। दूसरों के वैलिडेशन के मतलब सामने वाला ठप्पा लगाए कि हाँ वो गलत है तभी तुम उसको गलत मानो, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। आपके साथ जो भी उस इंसान ने किया, आपको महसूस कैसा हुआ, वो जो आपके अंदर की फीलिंग है ना, आपका दिल जो बोल रहा है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और इसलिए उसकी मैं बात बोलता मानो, हूँ, किसी का वैलिडेशन की जरूरत भी नहीं है। हाँ, पर हाँ। एक्सप्लोर करो उस फीलिंग को, क्योंकि अगर आप एक बहुत सेंसिटिव इंसान हो, now again sensitivity unfortunately has also a different meaning today. Really, so many words today have a very different meaning. Sometimes what happens, जो इंसान बुराई को देख पाता है उसको सेंसिटिव का धब्बा लगा जाता है. So again, every word, that's why I generally ask the client, give me your definition of sensitivity, give me your definition of abuse, give me your definition of sexual abuse. That is what I was telling from the Everybody's starting. definition It's is very different. different, because what Very happened when I different. worked with clients, sometimes they're not sensitive, they're actually speaking the truth, but the world has tagged them as sensitive. Yes. So, what I'm telling you, what I generally encourage my clients to say is, Hmm. in my experience as a wife, in my experience as a husband, in my experience as a friend, because for example, you are addressing someone as a friend, Hmm. okay? Hmm. You are talking to that individual about her husband. No, suppose she is talking to you about her husband, but you are his friend. The Hmm. behavior is very different, the relationship is Very very different. That is why I generally tell people, or even when you're having a conversation, start by saying, in my experience, different. and I am speaking here about my friend, not about your husband or wife. I understand, but You get the I think difference? we are veering from the topic because it's forgiveness, and I've tried to come back to it a lot of times. I've I answered the understand question that of there are a forgiveness. lot of layers I've in answered the in the. question of forgiveness. If again you want me to repeat, I will No, no, no. repeat it. I Huh. mean to say Hmm. when I say forgiveness, I mean to say, how do we address it? How does a person heal and move ahead? That's what I So, said. When you got teary, I just answered it and you got teary. How do you feel that this happened to you? I'm angry. Feel it. हिंदी Go through हिंदी that emotion. हिंदी हाँ, में बोले। जैसे हाँ। आपको गुस्सा, आपके साथ कुछ हुआ और आपका अगर अच्छा नहीं लगा, हम्म। फॉरगिवनेस को एक्सप्लोर करने से पहले कैसा महसूस हुआ कि आपके साथ ऐसा सेक्सुअली हुआ, मुझे हम्म। अच्छा नहीं हाँ। लगा. हाँ। टॉक अबाउट इट. हम्म। टेल मी हाउ इज योर बॉडी फीलिंग. हम्म। वेयर आर द चार्जेस इन योर बॉडी. व्हाट हम्म। डिसीजंस यू टुक. ठीक है, आज के बाद ना मैं बाहर नहीं जाऊंगी, या मैं बाहर नहीं जाऊंगा, या मैं हम्म। किसी को इतना नजदीक आने नहीं दूंगा. देर आर हम्म। मेनी थिंग्स, उसको एक्सप्लोर करो. हम्म। हर चीज को एक्सप्लोर करो, अपने माइंड, फिजिकल, इमोशनल, हर लेयर पे एक्सप्लोर करो. हम्म। फील द चार्ज इन द रॉ फॉर्म, हम्म। and then automatically the self forgiveness will happen. If you have processed it, you will realize that चलो इसमें तो मेरी गलती थी ही नहीं. हम्म। बेकार में मैंने अपने आप को बोला कि ये मेरी गलती है, बेकार में हम्म। अपने आप को कोस रहा था या कोस रही थी. That हम्म। all will come out. But if you directly jump and say, I want to forgive, help me forgive. No, हम्म। I want to forgive, help me process my emotions first. Okay. So there is Understood. no forgiveness. Now you got it. Yes. It will not serve you in the long run. हम्म। एंड व्हाट हैपेंस, आप फॉरगिव तो कर लोगे, पर हर बार आप डर डर के जोगे, चलो ये मेरे साथ ऐसे करेगा, ये मेरे साथ ऐसे करेगी, ऐसा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. क्या फायदा इस फॉरगिवनेस का? सो अगेन, Absolutely. This is so what is the true. definition of forgiveness is very subjective. Your definition was very different, that I should not feel the charge. Some people's definition might be very different from yours. Some people's definition is, I just want to spiritually grow. So if I don't forgive, I will not grow. So I cannot No. generalize this answer of forgiveness. So my definition of forgiveness is like that. Why? Because I have gone to healers. I have
taken sessions, I've done a lot of things to forget this, forgive this, or lessen my charge. And I am completely surprised that even today, after 45 years or more, 50 years, 45 years, I still ended up crying. For what God reason? I mean, God knows what reason. I don't know. But So there are something many obviously reasons, felt. Ginny. First and foremost, Hmm, if I can take your example, may I? hmm, Uh, it is absolutely okay, and it is one of the response that after 45 years or so something might come up because something deeper must have got triggered. hmm. So please don't feel that after 45 years, if I'm crying, what is there? Sometimes our No, but subconscious mind layers में आता है. right. Maybe So something very deep came up. हाँ, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी कि मैं इतने हीलर्स के पास जा चुकी हूँ अपनी Hmm. इस इस चीज़ को बहुत सारी हीलिंग कराने के लिए, अपने अंदर से निकालने के लिए, अपने अंदर से इस दुःख को निकालने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। तो मैं हैरान थी कि आज भी मुझे ऐसा महसूस हुआ, लेकिन बहुत सारी बातें याद आती हैं, अब मैं उसके बारे में बात भी कर लेती हूँ। अ, Again, मुझे when गुस्सा भी people नहीं say, आता, सब कुछ है, लेकिन मैं जब वो दुःख महसूस होता है ना, इसीलिए मैंने कहा कि मैं अपने मन की शांति के लिए उनको माफ़ करना चाहती हूँ, ताकि ये दुःख जो महसूस होता है, ये गुस्सा जो महसूस होता है, सी दिस वाज़ नॉट पेन, दिस वाज़ एंगर that I couldn't do anything about it. I didn't do anything about it. I can't do anything about it. again, listen to your words. If I may comment on your own life, I really do not know what kind of healers you have gone and what kind of sessions you have done. So I can't comment on that. But the very fact you're saying is, I can't do anything about it, I can't do this, I can't forget it, means आपने process authentically नहीं No, किया no, है. no. I meant to say justice. When I say I can't, meaning I cannot bring them to justice. And sometimes you I cannot cannot. drag Closure them to नहीं justice. मिलता है. And Socially, sometimes legally, you can't. This is again, sometimes you need to process the pain that you will never get a closure. But I would definitely request you to explore more about this, because if this is the amount of charge you're having, that means the processing has not been done. And even with your language, now I've decided to forget, just I want to do it for being at peace. Again, you're bypassing it. बिकॉज इतना गुस्सा नहीं आएगा वो भी 45 years के बाद. 50. See again 50 मतलब I do not know how old are you, but this I'm is one more thing 56. so then it should have happened at 6 years old. It started from 3 years old every year. So if it started at 3, then what was the act again? It may, please understand, this is just for the benefit of people. She's 56. It started at 3 to 6. At what age you started taking sessions? Maybe 10 years back. 10 years back. So technically When at was the 4, last time I took a session with you? I think that was the last sessions I did with you was something in 2018, right? I took sessions with you also. I took a you lot of took other sessions sessions. with I did me, soul but meta we play. I didn't did work on this, hypnotherapy. Ginny. Uh, I did soul meta play. I did hypnotherapy. I did a lot of other things. And other Correct. than But that, with me, we didn't work on this because this you will not be speaking like this if you worked with me. First of all, that well, we forgiveness did का a तो few शब्द ही नहीं sessions and आता है. then I stopped. Yeah, we did something else. क्योंकि my clients, if No, they we are really started with this working only. We started with this only to because get it an was so early on understanding, in my life. But if you Yeah, yeah, technically yeah, look, if you're yeah, 56 now, you technically started at 46. If my math is yeah, good, yeah, yeah. because Something about I 10 years feel back. some people are blessed more in maths than me, but if luckily it is 10 years, so it's quicker for me to do the math. It's at Yeah. 46. Yeah. So at 46 to 56 or so, I do not know how much of Your net is gone. Okay. Hello. His net is gone. बहुत लंबा चल जाता है सेशन. ये टॉपिक ऐसे हैं कि अब इसने जितनी बातें बताई हैं इंग्लिश में, अगर आप में से किसी को कुछ समझना हो, सवाल हो, तो प्लीज मुझसे पूछ लो उसके वापस आने तक, क्योंकि मुझे लगता है उसका नेट जो है वो चला गया है.
तो Aaron says, perhaps you could address this concern later. Forgiving an abuser, abuse regardless. Yeah, what happened? I think your net went. Oh, oh. So it will take you time. Or shall I end it? Okay, okay, okay. तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई, मैंगलोर में रहता है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो कहता है 2 मिनट दो, मैं आता हूँ. So perhaps you could address this concern later. Forgiving an abuser, abuse regardless, is painful, or is forgiving sexual abusers more difficult than other abuse perpetrators? Uh, Jay, I can only answer this question from my perspective. Yes, definitely abusing sexual abusers is more difficult. It because they've violated your body, they've broken your trust, they've hurt your emotions, you know, on each and every level. So yes, it is. I according to me, it is very difficult, and that is my personal uh, uh, opinion, and that is my personal experience. Forgiveness is done under pressure. Yes, a lot of times it is done under pressure. If I have to say, there are people, औरतें होती हैं, आदमी होते हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं, अगर बच्चों ने कहा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, चाचा, मामा, ताया, पड़ोसी, तो वो कह देते हैं, अरे चुप कर, किसी को बताना मत, कुछ नहीं होता, यू नो सो इट इज डन अंडर प्रेशर. हेलो, हाँ आरन. No, there's no point. Okay, never mind. ठीक है, I will end this session. I am just answering a few questions, and then तब तक आ गया तो ठीक है, नहीं तो we'll end it. Okay, okay, bye. So electricity नहीं आ रही, and he is unable to connect to YouTube. So forgiveness is overrated. I totally agree with you. Yes, forgiveness is overrated, but I don't agree with Aaron. Forgiveness is important. It is spiritually important. It is important at your soul level. Like I said, that, you know, for the sake of your own peace, thank God you've come back. So, So Jay's question I was addressing, he says forgiveness is overrated. Does yes, forgiveness mean absolving the abuser for abuse done? what do you mean by absolving the abuser? मतलब के absolving the abuser के मतलब इसने किया, हाँ ठीक है, इसने किया, okay, let, Okay, so that's my what I question, understand. अगर आपको लगता है ठीक है तो ठीक है. फॉर द अब्यूज डन मतलब कि उसको भूल नहीं सकता इंसान. फॉरगिव करने का मतलब, मैंने ये पहले भी कहा था कि माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप भूल जाओ. माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे वो हरकत दोबारा करने दो. अब एक पति पत्नी के रिलेशनशिप में कई बार ऐसा होता है कि पति जबरदस्ती, एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल ले रही हूं, Maybe just जबरदस्ती. 1 minute in case just to complete my sentence with the session. May I? Yeah. So when you talk about 46 to 56, again, the amount of work you have done and what kind of work. Why I'm telling this, because a lot of people, I see them telling, I did 10-year session, 20-year session. No, give me the number of sessions. Tell me what you did. Were you consistent? Like how you said, I stopped the session for whatever reason. So do you see, it's very important to be consistent also in your sessions. So that is how authentic work is. For you to just know that this is my pain, I am going to honor my pain, respect my pain. Forgiveness is optional. First, I will honor my experience. Right. Got Okay. it? So honor your experience. Okay. So मैं ये कह रही थी कि माफ करने का मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को दोबारा मौका दिया जाए कि वो आपके साथ दोबारा वैसी हरकत करे, या कोई भी आपके साथ वैसी वो हरकत दोबारा करे. मेरे लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिंदगी में जिनके लिए मैंने कहा, मतलब क्यों ऐसा हुआ और कब हुआ और कैसे हुआ मुझे नहीं पता, पर एक वक्त आया जब उस
बार बार जैसे कभी याद आ जाता है, कई, और कैसे याद आता है, ऐसे बैठे बैठे नहीं याद आता है। कभी आपने टीवी पे कुछ देख लिया, कुछ मूवी में कुछ देख लिया, कभी किसी का सुन लिया, या कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन को याद करते हो, या किसी मोमेंट में आप दुखी बैठे होते हो, उस समय पर आपको वो बात याद आती है। या आपके जिंदगी में रिश्ते, जैसे पति के साथ रिश्ता, या बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता, या गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता, उन रिश्तों के दौरान कुछ ऐसा होता है कि आपको वो बात याद आती है, या कोई आपसे पूछता है, तो उस दौरान बहुत बार ये कहा जाता है कि बोल दो ना तो मन हल्का हो जाता है। कितनी बार बोलोगे? एक बार, दो बार, चार बार रो लिया, पिट लिया, सब कुछ कर लिया, हल्का तो हो ही नहीं रहा। दुख तो अपनी जगह ही है, अंदर ही है। तो माफ अगर मैं बोल भी दूं, हाँ मैंने कर दिया, चलो मैंने कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने माफ किया, मैंने उस चीज को हील करने की अपने तरीके से कोशिश की, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भूल जाऊंगी। भूल तो नहीं सकती मैं पूरी उम्र कि किस इंसान ने मेरे साथ क्या किया है, या मैं छोड़ो, किसी के साथ भी किस इंसान ने क्या किया है। और जब आप भूल नहीं सकते, अचानक किसी दिन अगर वो आदमी सामने आ गया, मैं तो उसका गला दबा दूंगी, मार मार के चिथड़े कर दूंगी, उसके परखच्चे उड़ा दूंगी, या उसको पकड़ के गर्दन से उसको पुलिस स्टेशन पे ले जाऊंगी। तो माफ करने का मतलब ये नहीं है कि कल को अगर वो इंसान मेरे सामने आता है तो मैं उसको लेके पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। माफ करना अपनी जगह है, वो मैंने अपनी शांति के लिए करना था। लेकिन जो गलती उसने की है उसके लिए उसको सजा तो मिलनी चाहिए, समाज को पता चलना चाहिए, उसको लीगली सजा मिलनी चाहिए, उसको भी तो जेल है। जो 55 साल से 50 साल से मैंने दुख झेला, वो 5 महीने तो झेले। ये मेरी सोच है। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को ऐसे ही जाने दो। माफ करने का मेरा मतलब ये है, हर एक के लिए अलग हो सकता है, मेरा मतलब ये है कि मेरे मन में मुझे शांति मिले। और मेरे ख्याल से जो मैं समझती हूँ, आपको वो शांति कुछ जिंदगी में कोई चीज नहीं दे सकती सिवाय एक के। अगर कोई आपको इतना प्यार करे कि उन सभी दुखों के साथ आपको अपना के उन दुखों को आपकी जिंदगी में एक एक तिनका भर की वस्तु बना दे, कि इतना प्यार और इतना आपको सहारा, एक तरह से प्यार आपको मिला जिंदगी में, कि वो जो हुआ, उन चीजों का अब आपकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं रहा। उस इंसान ने वो प्यार जो आपको बचपन में मिलना चाहिए था, वो सहारा, वो मदद जो आपको बचपन में मिलनी चाहिए थी, या जब भी ये हुआ, जवानी में हुआ, बड़े होने के बाद हुआ, उसको उस इंसान ने आपको संभाल लिया। भावनात्मक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे आपको संभाल लिया। तब जाके आपके मन को शांति मिलेगी। Thank you, Mahendra Vishwakarma. Jay says, is forgiving and make peace equal to healing? Uh, Healing could lead to making peace, and that could lead to forgiving, but it is not equal to it. It is not written in stone that this will happen. जरूरी नहीं है। These things are very relative. एक इंसान के लिए कुछ और हो सकता है, दूसरे इंसान के लिए कुछ और हो सकता है। हर एक का अपना स्वभाव है, हर एक का अपना अलग अनुभव है। तो कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे संविधान तो हमारा कानून बना देता है कि ये चीज अब्यूज नहीं है तो उसको सजा नहीं मिल सकती। अरे जो इंसान दुख से गुजर रहा है, उसके दिल से पूछो ना कि क्या अब्यूज है और क्या नहीं है। एक औरत का शोषण कर सकती है, जरूरी नहीं है कि एक आदमी ने ही करना है। एक आदमी एक लड़के का या आदमी का शोषण कर सकता है, मानसिक तौर पे कर सकता है, भावनात्मक तौर पे कर सकता है। जरूरी नहीं कि छूना है, छूने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे तरीके होते हैं किसी का शोषण करने के। शोषण वो होता है जो आपको किसी भी लेवल पर दुख देता है, फुल स्टॉप। उसे दूर करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए आपको जो भी करना पड़ा वो जायज है, क्योंकि संविधान कहता है कि आप अपने बचाव में खून भी कर दो तो माफ है। No, that's very subjective, Ginny.
No. If in self-defense you kill somebody, I said in self-defense only. Okay, I would not If like you to kill comment on somebody, that, but huh. if that's your Anyway, opinion. I think it's been 1.5 hours again today. I think we should end this session. Although these conversations can go on, and the discussions have so many layers to it, maybe on some other subject, we will come back again Yeah, and soon. as I told, everyone has their own opinion. You have your opinion, I have, and we all come with our own respective Right. experiences. Thank you so much. I am And very everyone, please use sorry. your discretion before, as I said, the disclaimer, use your own discretion before incorporating any of this knowledge, at least from my side, Yeah. because I feel Thank you that's so very much. important. But thank you Thank so you, much Aaron. for the space given. Thank you. Thank you, Okay. everyone. Bye bye. 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 राजश्री, स्नेहल और जो भी औरतें हैं यहाँ पर, या जो भी वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह से झेला है बचपन में या जवानी में, आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट यू हैड टू गो थ्रू सो मच, और इतने सालों उन दुखों को आप झेलते रहे। जो ग्रुप में हैं उनके साथ तो मैं एक ज़ूम सेशन कर सकती हूँ, लेकिन जो लॉ ऑफ वन के ग्रुप में नहीं हैं, उनके साथ मैं कैसे करूँ, मैं नहीं जानती। तो लेकिन हाँ, मैं एक जब समय मिल सकेगा, कोई हीलिंग मेडिटेशन ऐसी बनाऊँगी, जिसमें हो सके तो आप इसे हील कर सकें। बाकी मैं इतना कहूँगी, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो अपने उस बच्चे को, जो आप बचपन में थे, उसे सामने रख के अपने मन में उसे खूब सारा प्यार भेजो। उसका हाथ पकड़ो, गले लगाओ और उससे कहो, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कोई बाल-बांका नहीं कर सकता, तुम्हें कोई छू नहीं सकता। और उस खुश, सुखी और सुरक्षित अपने उस स्वतः को, बच्चे को अपने अंदर समा लो। इससे बड़ी हीलिंग मुझे नहीं पता क्या होगी। जितनी बार आपको ये करना पड़े, करो। खूब हीलिंग भेजो अपने आप को, अपने उस बच्चे के रूप में, उस अपने आप को, और उसे अपने अंदर समाते रहो। उसे कहो कि तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगी, और सॉरी कि उस वक़्त मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। लेकिन आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा साथ दूँगी। ये आप कर सकते हो, करो, अगर करके देखो, अगर आपको मदद मिलती है। अ, बाकी आई अंडरस्टैंड परफेक्टली कि आप लोगों के मन में क्या गुज़री होगी, क्या महसूस तब किया होगा और आज कर रहे हो। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जितना हम उस दुःख को पकड़ के बैठे रहेंगे, उतना वो हमें सताएगा, हमें कमज़ोर बनाएगा। हमें उससे ऊपर उठना है, ये सोच के कि जो हुआ वो अतीत में था, तो क्या हुआ अगर मेरे साथ हुआ? पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर आज और अभी में है, ये लीनियर नहीं है। तो जो हो गया, हो गया। अब तो लॉ ऑफ वन पढ़ने के बाद ये तो पता है कि, हालाँकि पहले भी पता था, कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पर हर चीज़ सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। हर चीज़ कैटलिस्ट नहीं होती, ये मैं पहले बता दूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो लिखी होती हैं। तो इन चीज़ों को इन चीज़ों से ऊपर ऐसे नहीं उठना है कि उसको अपने अंदर दबा देना है। इन चीज़ों से ऐसे उठना है कि उन पर उनका उपचार करके उसके ऊपर विजयी पाना है। उसका उपचार करना है, चाहे वो किसी से बात करके करो, चाहे उस इंसान को जाके खींच के थप्पड़ मार के अगर मन को शांति मिलती है, उसको पुलिस कंप्लेंट करके मिलती है, तो मैं तो कहूँगी करो। कर सकते हो तो। मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि मैं जानती ही नहीं वो लोग कहाँ हैं। एक का मुझे पता है अता-पता, वो इंडिया में नहीं है, लेकिन बाकी लोगों का मुझे अता-पता ही नहीं पता कि वो ज़िंदा भी हैं कि नहीं। तो करना चाहो, करो, अगर उससे मन को शांति मिलती है तो ज़रूर करो।
चाहे दुनिया कुछ भी बोले। तब हम बच्चे थे, हम डरते थे, पर आज हम बच्चे नहीं हैं। और आज भी एक कानून है कि अगर बचपन में आपके साथ कुछ हुआ है तो आप उसकी आज भी कंप्लेन करते हो तो उस इंसान को सजा मिलती है। सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर मेरे गपशप विद गिनी के प्लेलिस्ट में लॉयर के साथ, एडवोकेट नीला गोखले के साथ मेरे सेशंस हैं। शादी और डिवोर्स के ऊपर भी है, पर सेक्सुअल अब्यूज पे भी है। आप चाहें तो उसको भी देखें। पता नहीं ईश्वर मुझसे ये वाले सेशंस दोबारा क्यों करवा रहा है, पर होंगे कुछ न्यू मेंबर्स जिनको शायद इससे मदद मिले। हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दीज सेशंस। और अगर किसी को इससे, आप जानते हैं किसी के साथ अगर ऐसा हुआ है, तो उनके साथ ये सेशन शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें, या ये बातें शेयर कर सकते हैं। आप देखो आपको क्या ठीक लगता है। फॉर नाउ थैंक यू सो मच। अगले बुधवार को और बृहस्पतिवार को ऐसे ही 2 सेशन और कर रही हूं। बुधवार को जो सेशन है वो है म्यूजिक के द्वारा आप अपने मन को कैसे कैसे उपचार कर सकते हैं, कैसे उसकी हीलिंग कर सकते हैं। और 12 तारीख को 11 तारीख को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, वो है भूत प्रेतों के बारे में और गार्डियन एंजल्स के बारे में, कि उनमें क्या फ़र्क है, दोनों एक ही सिक्के के कैसे पहलू हैं, वगैरह-वगैरह। तो उन सेशंस में मैं आपको दोबारा मिलूँगी। फ़िलहाल मेरा लॉ ऑफ वन का सेशन तो आज का रह गया क्योंकि ये बहुत लंबा चला। तो गुड बाय फॉर नाउ, आई विल सी यू ऑन मंडे। गुड बाय।